Dear students, today we are going to discuss the next part of our Civics chapter, Outcomes of Democracy. Today we are going to discuss economic growth and development in democratic countries as well as in non-democratic countries. Dear students, it is the expectation from the democratic government to produce a good government. But हम ये भी देखते हैं कि it should also produce a government where there is more development. But this fulfillment or this expectation is not fulfilled by democratic system. If we compare democratic government with dictatorship in the last 50 years from 1950 to 2000, then the economic growth of non-democratic countries is higher a little bit than democratic countries. And it is a matter of worry, it is a matter of tension for us. But this alone cannot be reason to reject democracy. केवल इस आधार पर हम डेमोक्रेसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते. एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन इकोनॉमिक्स, जैसा आप इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स like the total population size of that country. Global situation means in which particular place that country is situated in the world. Then cooperation from other countries, how a particular country is cooperated by other countries, and the economic policies which are adopted by the government of that country. The difference in the rate of economic development between less developed countries and dictatorship and democracies को हम देखें तो बहुत ही नेग्लिजिबल है. बट जब डेमोक्रेसी नॉन डेमोक्रेसी को देखते हैं तो ये थोड़ा ज़्यादा है. वी कैन नॉट से दैट, हम ऐसा नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी इज ए गारंटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. बट हम नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की गारंटी है. बट हम ये भी नहीं कह सकते, अर्थात ये भी हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ये पीछे भी नहीं रहनी चाहिए. व्हेन वी फाइंड सच सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ between countries under dictatorship and democracy, it is better to prefer democracy as it has several other positive outcomes. Here you would see inequalities of economic activities in selected countries. In South Africa, 20% top population, it means out of the 100% population, 20% population is having 64.8% natural resources. While the poor persons who are the 1/5 of the total population, they are having only 2.9%. Same condition is in Brazil. In Brazil, top 20% people are having only 63% resources. Not only it is a big part, but bottom 20% are having 2.6%. So the income distribution in world is unequal and it is a matter of worry. Likewise, the rate of economic growth for different countries between 1950 and 2000 is given here. In democratic regimes or the countries where there is democratic system, the economic growth per year is 3.95%, while in dictatorship it is 4.42. It means there is a gap of 0.47% and it is a big gap. So we have to work to manage both these two inequalities. Then dear students, we would study reduction of economic inequality and poverty. It is the expectation from the democratic government to reduce the economic inequality as well as poverty. Dear students, डेवलपमेंट जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही ज़्यादा डेवलपमेंट इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ और डिफरेंसेस को भी घटाना है. इवन व्हेन जब एक कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, उस देश की जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूटेड होती है उसमें सभी का शेयर इक्वल हो तभी बेटर लाइफ होगा. अब आप देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ भी आती हैं. इसलिए हमें ये देखना है कि गुड्स और अपॉर्चुनिटीज़ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं. But dear students, in democracies, there is political equality. It means one person, one vote, one value. All persons are free to contest election to reach the highest political post. But when we compare it in economic arena,
or in the economic field, then we find a lot of gap. In our country or in mostly democratic countries, there are handful ultra rich people. It means कुछ एक सिलेक्टेड लोग हैं जो बहुत पैसे वाले हैं, उनके हाथ में देश की वेल्थ और इनकम का एक बड़ा हिस्सा है, एक बड़ा हिस्सा इनके पास है. जबकि दोज पीपल हु आर लिविंग इन बॉटम, जो बहुत ही गरीब लोग हैं नीचे हैं, उनके पास जिंदा रहने के लिए भी बहुत कम चीज़ें हैं. दे स्ट्रगल फॉर गेटिंग दियर बेसिक नीड्स लाइक द फूड, क्लॉथ, हाउस, एजुकेशन एंड हेल्थ. इन एक्चुअल लाइफ डेमोक्रेसीज डोंट अपियर टू बी. और यदि रियलिटी में देखें तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़ को दूर करने में असमर्थ रहे हैं. हमने प्रीवियस ईयर की इको बुक में भी पढ़ा है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जो वोटर्स हैं, पॉपुलेशन है, उसका एक बड़ा हिस्सा पुअर है. आप देखते हैं उनका डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट में बड़ा इंटरेस्ट है. हर पॉलिटिकल पार्टी उनके वोट को प्राप्त करना चाहती है, बट नो पॉलिटिकल पार्टी इज सीरियस टू एड्रेस और टू रिमूव और टू सॉर्ट आउट दियर सच प्रॉब्लम. इन बांग्लादेश में आप देखोगे दैट इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, उसमें मोर देन 50% पॉपुलेशन इज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन. There are many other countries which are democratic, but they are dependent for food supply on other countries. It means वो डेमोक्रेटिक तो हैं, बट वो अपने लोगों को भोजन प्रोवाइड करने में भी असमर्थ हैं. वो भी दुनिया के अदर कंट्रीज़ की तरफ निगाहें डालते हैं, वहाँ से कुछ एक्सपेक्टेशंस करते हैं. इस प्रकार हमने देखा कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में जो इकोनॉमिक इक्वलिटीज़ हैं और पॉवर्टी है वो बहुत ज़्यादा है. इसके ऊपर हमें बहुत काम करने की आवश्यकता है.